Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is Salma Khan. Our topic is tense. The word tense is derived from Latin word tempus which means time. ये लफ्ज़ लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है और इसका मतलब है टाइम। इंग्लिश लफ्ज़ टेंस का कई मानी है, मतलब परेशान होना, कुशीदा सूरत हाल, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में इसका मतलब है ज़माना यानी वक्त होता है। हम जब भी कोई बात करते हैं तो इसका ताल्लुक किसी न किसी ज़माने से ज़रूर होता है। A tense is a form of the verb that expresses time. It tells about action when the action happens or happened. Tense refers to the time at which an action, event or state occurs. ये एक ऐसा फ़ेल है जो हमें एक्शन के बारे में बताती है कि एक्शन कब हुआ है, कब होता है और कब होगा। There are three basic tenses in English: present, past, future. Present, something happens in the present. कोई काम जो हाल में होता है। Past, something happened in the past, जो past में हुआ है। Future, something will happen in future, जो मुस्तकबिल में होगा। These three tenses further form 12 tenses. Each tense makes four forms: present indefinite, present continuous, present perfect continuous, past indefinite, past continuous, past perfect continuous, future indefinite, future continuous, future perfect continuous. So let's discuss the very first tense, present indefinite. Use number first. Present indefinite tense is used for daily routines and habits. ये टेंस मौजूदा यानी हाल में रोज़मर्रा कामों और आदतों के लिए इस्तेमाल होता है। हमारा जो भी रूटीन है, आदतें हैं, उनके लिए हम ये टेंस इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल्स: वी गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड ऑफर द प्रेयर। सेकंड एग्जाम्पल, ही स्मोक्स। एक रूटीन है और एक आदत है। स्ट्रक्चर ऑफ दिस टेंस: ही शी इट अर्ली, ये सिंगुलर सब्जेक्ट्स है। इसके साथ वर्ब फर्स्ट फॉर्म विद एस आर ई एस। दे यू वी आई, दे आर प्लूरल, सो इसके साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म विदाउट एस आर ई एस देन ऑब्जेक्ट। इस टेंस में जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं इसके साथ एस आर ई एस लगते हैं, सिंगुलर वर्ब लगते हैं। सिंगुलर वर्ब्स मतलब एस आर ई एस के साथ, और जो प्लूरल सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ प्लूरल वर्ब लगते हैं। एग्जाम्पल्स: शी रिसाइट्स द होली कुरान डेली, दे प्ले क्रिकेट, शी वॉशेस द डिशेस। यहाँ पे एक और बात ज़रूरी है, जो वर्ड्स उन लेटर के साथ ख़त्म होते हैं, सी एच एस एच ओ एक्स के साथ ख़त्म होते हैं, उनके साथ ई एस लगते हैं और बाकी के साथ जस्ट एस लगते हैं। यूज़ नंबर सेकंड। दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ और लॉ ऑफ नेचर। ये ज़माना कुदरत के कवानीन के लिए भी इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल्स: द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज मशरक़ से तुलू होता है। स्प्रिंग स्प्रिंग्स इन द स्प्रिंग, द अर्थ revolves around the sun. Use number third. Present indefinite tense is used to talk about scheduled events in the near future. Examples: my teacher retires in May next year. The university reopens in June. The exam begins on Monday. Use number four. This tense is used in proverbs. ये tense कहावत में भी इस्तेमाल होता है। Examples: charity begins at home, hope sustains the world. Use number five. Present indefinite tense is also used in imperative sentence. Imperative sentence वो sentence होता है जिसमें request, command, हुक्म हुए हो। Examples: write neatly, work hard, do well next time, bring a glass of water. So these are the examples of imperative sentence. Negative structure: subject does not, verb first form object, मतलब with singular subjects does not, with plural subjects do not. Examples: she does not sing beautifully, he does not love to read books. Interrogative:
Does, do, subject, verb, first form, object. Does with singular subjects, do with plural subjects. Examples: do birds fly in the sky? Do they play football on weekends? There must be sign of interrogation at the end of the sentence. Does she watch drama?